Welcome back everyone. In the series of learning C programming, today I am going to talk about the execution process of a C program. In the previous video, I have discussed structure of a C program, but now we will see the execution process of a C program. Now we will discuss translating, linking and loading concept here. Each step we are going to discuss in the help of a flowchart, right? So upon the completion of this session, the learner will be able to understand execution process of a C program or C language. So very first, you write a C program. Whether you use any IDE, that is Integrated Development Environment, or any text editor like Notepad, Notepad++ or anything. You write your program and save that program with extension .c. ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ C program ଲେଖିବା then ତାକୁ save କରିବା ପାଇଁ ଆମେ .c through ରେ ତାକୁ save କରିବା. Okay, like suppose program name is game, so you will save this as game.c. Okay, game.c here, right? So that is known your source program or source code, right? So जदि आमे game.c रे किछि प्रोग्राम को सेव करछि ताल जो प्रोग्राम आमे सेव करले जो ओरिजिनल कोड ता आमे लिखिछे प्रोग्राम रो ताको आमे सोर्स कोड बा सोर्स प्रोग्राम बोली कहबा. Then actual the process comes. Now after this program the concept of preprocessor comes. Okay, preprocessor concept aschi. So what does that mean? See, in a program we have used has include stdio.h for standard input output, then has include conio.h for console input output function, and has defined max 100 or anything जाको हमें macro definitions बोली कहउछि. क्लियर? जो गुडा को हमरो hash symbol रे स्टार्ट होउछि, सब गुडा को hash symbol through रे स्टार्ट होउछि. So this is what preprocessor directive. See, these hash lines compiler cannot understand. These are only understood by a program named preprocessor. Now what preprocessor do? In the header files, first is standard input output, second one is console input output, and third one is the macro definition. Okay, here this is macro definition, right? So here we have the meaning or declaration of those predefined functions. Suppose I am using the functions printf, scanf or getch. These are predefined functions, but compiler does not know what does they mean. So compiler is going to source the meaning of these functions. Okay, now the meaning is where? In these header files, this stdio.h header file, conio.h header file. Okay, and the definitions are where? In the C libraries, right? The C libraries are part of C software. That's why we include these files in our program so that compiler can understand what is the meaning of printf, scanf or getch function, right? So main point is what? Preprocessor is, it will replace the files starting with hash with the declaration of the header files. Okay, जो files बा जो lines गुडा को हमरा hash रे start हेतिबो से कोन करबो ए जो hash गुडा को replace कर दबो. Okay, and expand the macro definitions as well. Expand means what? Whenever in your program I am using the max, it will replace that max variable with 100. जोडी जोडी प्रोग्राम में max को यूज करछि से ता जगह रे 100 को replace कर दबो. Clear? And it will remove all these hash. ए सबु hash गुडा को से automatic remove कर दबो, link करे सला पर remove कर दबो. And this is what you can say expanded source code. आउ या परे हमें ताको कोन कहबा? प्रीप्रोसेसर सरला परे प्रीप्रोसेसर काम जेतले कंप्लीट हेजिवो ताको सोर्स कोड न कहि कि हमें कोन कहबा? एक्सपांडेड सोर्स कोड, जाको कि हमें डिफाइन करछे .e एक्सटेंशन ने. देखन जदि एटा हमर game.c सोर्स कोड थिला देन एक्सपांड हैला परे सेटा एक्सपांडेड सोर्स कोड हे गेला, सेति पे हमें ताको कहले game.e. एबे तार एक्सटेंशन चेंज हे गेला. अदरवाइज हमें ताको कहि परिबा और इंटरमीडिएट कोड, एक्सपांडेड सोर्स कोड और इंटरमीडिएट कोड जारे के एक्सटेंशन होची .i. So हमें ताको game.e लिखि परिबा, अदरवाइज game.i बोली भी लिखि परिबा. Now your source program is expanded and there is no line which started with hash because these lines are already been processed by preprocessor, right? Now compiler will compile the program. See, here the concept comes compile, जोटा कि हमर compiler करियो. If there is any syntax error, then yes, if yes, then you have to again edit. See, here if yes, then you have to again edit your source code and the same process will be done. If no syntax error is there, then first of all, which file would be generated? Assembly file. Here
game.asm that is asm that is your assembly file जार के extension होची asm.asm having the extension .asm, right? Then the role of assembler will come. Assembler will convert the code written in assembly language into object code having extension .obj. So जेतले assembler पाखु को आसीबो assembler कोन करबो जदि किछ assembly कोड अछि हम प्रोग्राम रे देन से ताको कन्वर्ट कर देला कन्वर्ट करबो काहाकू assembly कोड जेतले कन्वर्ट हे सरिबो से कन्वर्ट हे जिवो ऑब्जेक्ट कोड रे assembly कोड कन्वर्ट हे जिवो ऑब्जेक्ट कोड रे जहार कि .obj होची extension ताले हमें game.obj एबे पाइले clear. Now object file have been created here, but this object file is not ready to execute. Still compiler will do something, not compiler exactly, that is the concept of linker. या परे हमारा concept आसीबो linker रो. So what linker will do, it will link all the object code into one file and link it with system libraries. System library means in which definitions of all predefined functions are exist that are part of C libraries, right? So those definitions are linked with our object code. Now your program is ready to execute after linking. So जेतोले object code create हेजिबो या पर हमर आसीबो linker concept or linking जे कि हमर link करेबो कहा सहित system libraries सहित object code को से link करेरा, right? Next your executable file will be created after linking which have extension .exe, that is game.exe. See here, that is game.exe. तम जेतोले ऑब्जेक्ट कोड ता हमर लिंकर सहित लिंक हे जाउची लिंकर कोन करूची सिस्टम लाइब्रेरीज को ऑब्जेक्ट कोड सहित लिंक करूची. सो लिंक कर सरला परे हमको मिलला हमर एक्जीक्यूटेबल कोड जहार के एक्सटेंशन होची .exe जेमते हमें game.obj थिला ऑब्जेक्ट कोड सेटा लिंक हेबा परे लिंकर थ्रू रे से कन्वर्ट हे गला एक्जीक्यूटेबल फाइल ले जहार हमर एक्सटेंशन और प्रोग्राम नेम होची game.exe, right? Next what, the task of loader comes. linker काम सरी गला फर्स्ट तो कंपाइलर ट्रांसलेटर काम कर देला ट्रांसलेटिंग कर देला. नेक्स्ट जेतले सिस्टम लाइब्रेरीज पाखु आसीला ऑब्जेक्ट कोड से ताको लिंक करेला एबे आसीला कांसेप्ट लोडर रो, क्लियर. सो लोडर कोन करबो, दैट इज योर फाइल इज नाउ रेडी टू एक्जीक्यूट, बट बिफोर एक्जीक्यूशन those files or program has to be loaded into main memory. So loader रो काम कोन मेन मेमोरी तुम्हारे प्रोग्राम को लोड करबो. मेन मेमोरी कहले RAM जाको हम कहै रैंडम एक्सेस मेमोरी. So from secondary memory or hard disk to RAM रे से load करेबो. Then only CPU can read the file from main memory and execute your file, clear. So the concept of loader is to load the exe file into main memory and now execution will be done, clear. So जेतोले हमें execute को आसीबा सेठी हमें डाटा इनपुट करबा game.exe रे ऑलरेडी हमर एक्जीक्यूटेबल फाइल रेडी हे जेतबो एक्जीक्यूट होबाबो. नेक्स्ट इफ देयर इज एनी लॉजिकल एरर, runtime error or data error, here only you will give data when you execute that file. So एठी हमें execute बेले data input कले and data input कला परे जेतोले execute को आसीबा so execution बेले से चेक करबो किछि लॉजिकल एरर अछि कि डाटा एरर अछि कि कोनोसी रन टाइम एरर अछि. सो जदि किछि एरर अछि देन से कोन करबो अगेन बैक करबो पूरा डायरेक्ट फर्स्ट सोर्स कोड पाखु तामाने सोर्स कोड से चेंजेस करबो एडिट करबो बा किछि करेक्शंस करबो एंड द सेम प्रोसेस पुनी कंटिन्यू करबो. जदि किछि नाही देन फाइनल आउटपुट हमर शो करबो एक्जीक्यूशन परे जहां भी हमर आउटपुट शो करबा थिबा से ताको प्रोड्यूस करबो. ओके, सो इफ एनी एरर कम्स देन ऑब्वियसली यू हैव टू एडिट योर सोर्स कोड and do something for corrections. If no, then you will get your output. This is the process of execution, right? So how many files have been generated during this process? केतरा फाइल हमर ए प्रोसेस से जनरेट हला देखन. फर्स्ट आसिला हमर .c फाइल फर्स्ट जनरेट हला. देन आसिला हमर इंटरमीडिएट फाइल और हम ताको कहू छे एक्सपेंडेड सोर्स कोड फाइल जोटा होची .e और .i फाइल सेकेंडली, ठीक अछि. नेक्स्ट आसिला हमर असेंबली फाइल जोटा कि कंपाइलर कला परे असेंबलर किछि जे असेंबली कोड रहला ताकू कन्वर्ट कला. सो ता पे आसिला .asm फाइल, राइट. देन असेंबलर जहा थिला काम से असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करा परे से ताकू कर देला obj फाइल .object कोड ऑब्जेक्ट फाइल ले कन्वर्ट कर दिला, क्लियर. सो ऑब्जेक्ट फाइल कोन कला जेतेबेले लिंक हेला सिस्टम लाइब्रेरी जे से फाइनली हमर प्रोड्यूस कला .exe फाइल जोटा कि हमर एक्चुअल एक्जीक्यूटेबल फाइल जोटा कि हमर रन होउची. रन होआ पे रेडी जति हम कहबा तले .c रु हमें केमती .exe जाय आसिले बाय दिस स्टेप्स, राइट. ए पड़ी बाबा हमर कन्वर्जन हे फाइल .c सोर्स कोड फाइल ता धीरे धीरे हमर कन्वर्ट हे कि एक्जीक्यूटेबल फाइल को आसुची, क्लियर बुझियला. सो आई होप यू गॉट द कांसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन till object file, that is game.c to game.obj,
then linking with system libraries, and in execution time the concept of loading comes. So that's why it is known as translating, linking and loading model, right? But generally in brief we can say source code, that file will be compiled, converted into object code and then executable code. तो simply आमे ताको कौन कहि परिबा, normally हमरो first रहला source code. Okay, so source code कौन हैला, first compile हैला, आ compile हैला परे here compile हैला परे से convert हे गला object code को, and then object code through रे से executable code को convert हैला. So generally हमें 3 steps से ताको count करछे. But if you going to deep, then first of all expanded source code, after that ASM assembly code, then object file and then your executable file comes. See, compiler itself having many steps that you will study in compiler design subject, not a part of C. And from where the execution start of a C program, that is from main function. Directly the control will go to main function. आमे already पूर्व video रे discuss करिचे जे गोटे प्रोग्राम रे गोटे ही मेन फंक्शन रहइबो आ प्रोग्राम रो एग्जीक्यूशन सब बेले ता कंट्रोल स्टार्ट हबो मेन फंक्शन, राइट? So that's it for this video, and now I will see you in the next video, right? Thank you.